Hi friends and welcome to Adda247. Can you tell me the difference in revolution and Kranti? Revolution, Kranti, revolution, Kranti. Well, my dear friends, what to tell you? I am getting mad of excitement about what's going to happen today at 7 p.m. that is going to revolutionize the education in India. सच में और मुझे पता है कि मेरे जैसे ही जो भी एस्पिरेंट्स है, जो भी फॉलोअर्स है Adda247 के एंड बैंकर्स अड्डा के, वो भी बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं ये सोच कर कि क्या आखिर होने वाला क्या है आज 22 मार्च को शाम के 7 बजे. वेल माय डियर फ्रेंड्स, चाहे जितना सोच लो, चाहे जितना एक्साइटेड हो जाओ, चाहे जितना समझ लो, ये तो पता चलेगा 7 बजे ही आज शाम के कि क्या होने वाला है एक्चुअली में इतना रेवोल्यूशनरी. वेल माय डियर फ्रेंड्स, सो जब हम लोगों ने इतना इंतजार कर ही लिया है तो कुछ थोड़ी देर और नॉर्मल रह लेते हैं, बिना पागल हुए रह लेते हैं. क्या पता कुछ बहुत ही बढ़िया खास किस्म का सरप्राइज मिलने वाला है. और ऑब्वियस है जब रेवोल्यूशन आने वाला है, व्हेन इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन in the industry of education in India, definitely it's going to be something really nice. Okay, so chalo bhai, my dear friends, now let's start our today's Hindu editorial analysis of 22nd March. कल मैं इतना एक्साइटेड था, इनफैक्ट कल भी एक्साइटेड था, आज भी एक्साइटेड हूं, लेकिन कल जो है इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि कल जो है मैं पूरे शो में ये बोल दिया है कि एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 22nd मार्च, जबकि कल था 21st मार्च. एनीवेज माय डियर फ्रेंड्स, दैट एक्चुअली शोज माय एक्साइटमेंट. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अब फाइनली लेट्स हैव लुक लेट्स हैव द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 22nd मार्च, जहां पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग टू हैव अ लुक एंड ओवरव्यू of all the important editorial articles of the Hindu, and after that, my dear friends, in-depth analysis of the two of the most important article in today's the Hindu editorial. And then, my dear friends, we are going to have a surprise game of vocabulary. बिल्कुल. तो उसके बाद भाई जैसे ही हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे सभी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स का, और जैसे ही हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको एक सरप्राइज वोकैबुलरी के रिगार्डिंग मैं देने वाला हूं, और ये एक सरप्राइज किस्म का वोकैब गेम होने वाला है. सो माय डियर फ्रेंड्स, since I know that most of you, in fact all of you, love surprises, today's session is actually a must watch, and all of you must watch this for sure and bring all of your friends to watch it as well. So chaliye, without much ado, let's have a look at the first slide. Well, my dear friends, now see, here is your first heading, a brief history of the past 70 years. Well, my dear friends, see, this is actually regarding the Congress, in fact, the way in which the opposition party of our country reacts, whether it's the Congress or any other party, you know. Well, if we talk about the last 70 years, most of the time it has been the Congress which has been at the center. Now, my dear friends, how exactly should an opposition behave? Should it be like more of a constructive opposition or a disruptive opposition? That theory is actually given in this particular article. See, my dear friends, it's a good article, okay? It's a good article that because it's related to the polity of our nation, but then again, it is not so important from our point of view. Hence, we have decided to skip this one, okay? So, chaliye. Now, let's have a look at the next one over here. See, the next one is growth by merger. Now, my dear friends, this is regarding two of the most important telecom companies of our nation. Yes, तो हमारे देश के दो बहुत ही जरूरी और आवश्यक और बहुत ज्यादा कह सकते हैं आप बड़े किस्म की जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनके मर्जर के रिगार्डिंग है ये, एंड ये बहुत ही खास किस्म का यहाँ पर आर्टिकल है. तो इसको हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, बोथ ऑफ दीज कंपनीज हैव अ लार्ज इंपैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी, एंड दैट्स व्हाई माय dear friends, it is a very important article and we shall discuss this one for sure. Okay, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए हैं कि आज का एक इनफैक्ट पहला सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है. वो है ग्रोथ बाय मर्जर. Now let's have a look at the next slide, and my dear friends, see page number 8. Now see what you say when you scroll down at page number 8, or rather when you view down towards page number 8. Well, these are the articles which actually will
catch your eye for sure. They are what goes around must come around. Now, my dear friends, all of us know today is 22nd March. It's the World Water Day. बिल्कुल save water, save life, जल ही जीवन है. और इसी पे आधारित एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो आर्टिकल है वाटर पोल्यूशन वाला, वो यहाँ पर दिया है. And my dear friends, there are full chances, there are 10% chances that this may come in your para jumble for sure. ठीक है, para jumble या close test में आपको ये पैसेज मिल सकता है, इसीलिए इसको ध्यान से जरूर सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना इसके पूरे एनालिसिस को, क्वेश्चन आंसर्स को, सबको. ठीक है भाई, and that's why this is a very important article. Okay. Now, my dear friends, let's have a look over here. Managing Manipur. Well, my dear friends, recently the blockade at Manipur was lifted as BJP has come into the power, and since BJP has come to power in Manipur, they are always doing whatever they can to correct Manipur. Well, it's more about the condition of the Manipur after the elections. But then again, my dear friends, it is not so important from our point of view, but if you have interest in it, you must go through it for sure. Okay, तो चलो अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं हम इसके अलावा और क्या आर्टिकल्स आए हैं. Well, my dear friends, today is Wednesday, as you all know, and the Hindu always interviews a great personality, an astounding personality on Wednesday, and this time the Hindu has interviewed the gold medalist of our nation, the Olympic gold medalist, yes, Mr. Abhinav Bindra. Well, actually, it would be better if we say Lieutenant Abhinav Bindra, because he's also, what do you say, I suppose he's also there with the Territorial Army. Might be it's Colonel Abhinav Bindra or Lieutenant Abhinav Bindra, but I don't remember the rank exactly, because Lieutenant is more of a starting commissioned officer rank and Colonel is very senior. Well, then again, my dear friends, he is a part of the Territorial Army for sure. And what rank is that of Abhinav Bindra can be asked in your GA, you never know, Anyways, so this is once again an important interview. All those of you who want to improve your spoken skills, you must go through this interview for sure. But from our written point of view, this is not so important. Okay, now let's move on. Let's have a look at the next one. Well, to eschew isolation. Now, my dear friends, another very important article, exactly. So, to eschew isolation, another very important article. What has actually happened in fact? बिल्कुल, तो क्या हो रहा है G20 में, क्या चीजें हैं, वो भी हम लोग यहां पर समझेंगे. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन चलते हैं अब हम लोग आगे और आगे देखते हैं. Bringing banks to the people. Now, my dear friends, bringing banks to the people. So ultimately, of recent we just saw, there have been some instances where the banks have been extremely harsh towards the people. But should it be like that or not? And that's why, my dear friends, we'll have to work on this one for sure. Okay. तो चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं. देखो भाई, हमने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि आज का जो आर्टिकल होगा उसके सेकंड पार्ट में G20 पे एक डिटेल डिस्कशन कर लेंगे. But my dear friends, I think today water is actually more important for all of us. In fact, and that's why perhaps we may have a discussion on that as well, or whatever. Let's have a look and let's start the session. So are you ready and excited for today's editorial analysis? And yes, let's have a look over here. Now, so the first one is growth by merger. बिल्कुल, तो देखो भाई, जो पहला आर्टिकल है वो यहां पर है ग्रोथ बाय मर्जर. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज रिगार्डिंग द मर्जर ऑफ आइडिया सेल्युलर and with which one? With Vodafone, exactly. So what exactly, why are these two telecom companies merging? What exactly is the facts? Let's have a look over here. Now, my dear friends, well, the Vodafone Group's decision to merge its India unit with the Aditya Birla Group controlled Idea Cellular is a classic case of two companies recognizing truth in the adage that the whole is greater than the sum of its part. Okay. Now, my dear friends, before I explain to you what exactly is the meaning of this particular line or what this particular line mean, you have to give me the meaning of the word adage. Okay, तो आपको मुझे बताना है कि इस adage का meaning क्या है. ये है आज का vocab का surprise game. That first of all, I'll ask you the meaning of the vocabulary word or phrase, and then I will tell you what exactly is the meaning. And you got approximately 30 seconds. Okay, not 30 seconds. 15 seconds to give me the answer. Tell me the meaning of adage. Time starts now. Hurry up. Come on.
Just 10 seconds more, quickly. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, the time is up, and well, Nipun says kahavat, Rohit says wise saying, Samita says proverb. Well, my dear friends, adage means an idiom only, okay? So actually that's more of an idiom. Now some of our aspirants are telling me to change the color of the marker. Okay, my dear friends, अब चलो आप कह रहे हो कि मार्कर हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो चलिए भाई मार्कर कलर चेंज हो जाता है यहाँ पर. लेट्स टिक टू द पिंक पैंथर पार्ट. ओके, एनीवेज, सो द वोडाफोन डिसीजन, देखो भाई जो वोडाफोन का डिसीजन हुआ है कि मर्ज कर लेते हैं अपने इंडियन यूनिट को आदित्य बिरला ग्रुप के सेल्यूलर के आइडिया ग्रुप के साथ, ये जो है एक क्लासिक केस है, एक बेहतरीन केस है दो बड़ी कंपनियों का ये सच मानना या फिर इस बात को मानने का या फिर इस इडियम को मानने का जिसमें यह कहा गया है कि हमेशा जो पूरा होता है वो दो चीजों के या फिर वो उस पूरे के हिस्सों के जोड़ से ज्यादा मजबूत और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है भाई, तो कुछ ऐसी कहावत से यहां बताना चाह रहा है. सो द वोडाफोन ग्रुप डिसीजन टू मर्ज इट्स इंडिया यूनिट with Aditya Birla Group's controlled Idea Cellular is a classic case of two companies recognizing truth in the adage or in the idiom that the whole is greater than the sum of its parts. Okay, अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं यहाँ पर my dear friends. Now, of the two mobile operators, Idea functioned in its early years as a three-way joint venture involving the Tata Group, US Telecommunications Behemoth, AT&T and Aditya Birla Group. बिल्कुल. तो अगर देखा जाए भाई इन दोनों में से जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं आइडिया एंड वोडाफोन, सो ऑफ द टू मोबाइल ऑपरेटर्स, आइडिया functioned in its early years as a three-way joint venture involving the Tata Group, US Telecom Behemoth AT&T and the Aditya Birla Group. ठीक है भाई, तो इन दोनों में से ये आपका आइडिया और वोडाफोन में से जो आइडिया था वो शुरुआत के सालों में एक 3 तरह के जॉइंट वेंचर की तरफ पे काम करता था. और इस वेंचर में कौन कौन थे? टाटा ग्रुप था इसमें, इस वेंचर में हिस्सा दिया था. यूएस का जो AT&T है वो इसका पार्ट था और साथ ही में आदित्य बिरला ग्रुप का अपना पार्ट था ही. तो उम्मीद करता हूं कि अब तक जो बैठाया है वो बैठ गया है दिमाग में. ठीक है भाई, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड पार्ट ओवर हियर माय डियर फ्रेंड्स. नाउ सो ओवर हियर, now behemoth, okay, once again a very important word. Behemoth means something that's really big or a giant. Okay, अब आगे देखते हैं. आपको the great खली तो याद ही होगा ना, right? That's called a giant by the way. So behemoth something that's really very big. Okay, anyways, now the proposed deal represents a welcome chance to resurrect its flagging fortunes. अब देखा जाए भाई तो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का वर्ड आपके सामने आया है, resurrect. तो क्या लगता है resurrect का मीनिंग क्या है? आंसर क्विकली, you got 15 seconds, time starts now. Hurry up. Come on. Last 10 seconds, quickly. 5, 4, 3, 2, 1. The time is up. समय समाप्त हो चुका है. ठीक है भाई. ओके, तो देखा जाए यहां पर लोग लगातार सही जवाब दे भी रहे हैं. रिसरेक्ट इज मोर अबाउट रिपेयरिंग स्टफ लाइक दैट. बिल्कुल, तो देखा जाए भाई टू रिसरेक्ट इट्स फ्लैगिंग फॉर्च्यून्स, यानी कि वापस जो है अब रिसरेक्ट का मतलब क्या है? बिल्कुल रिपेयर करने के सेंस में यहां पर बात होती है रिसरेक्ट वाली. सो दैट्स द केस व्हाट इट्स बीइंग शोड ओवर हियर. ओके, तो यानी कि देखा जाए तो ये सी यहां नाउ व्हाट दिस पर्टिकुलर लाइन मींस, द प्रपोज्ड डील रिप्रेजेंट्स अ वेलकम चांस टू रिसरेक्ट इट्स फ्लैगिंग फॉर्च्यून्स. दैट मींस the fortune or rather the condition of Idea and Vodafone wasn't really good, but this particular deal might resurrect or repair their chances at the Indian market, in the Indian market, तो देखा जाएगा भाई भारत के मार्केट में जैसे ही जियो आ गया है, मतलब जियो तो आ गया है लेकिन बाकियों का जीना एकदम हराम कर दिया है जियो ने. तो एनीवेज, तो भाई ये जो सिस्टम है, जो फंडा बना हुआ है, इसकी वजह से आइडिया को भी बहुत नुकसान हुआ था और वोडाफोन को भी बहुत नुकसान हुआ था. और इसीलिए बचने के लिए, ठीक है भाई, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में ये गठबंधन कर दे रहे हैं. तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली शायद जो उनके चांसेस थे वो वापस सही हो जाएंगे, वापस शायद ठीक ठाक हो जाएंगे. ठीक है भाई, तो कुछ ऐसा ही बताया जा रहा था अब तक के इस हिस्से में. अब आगे क्या है, आइए हम लोग यहां देखते हैं और आगे समझते भी हैं व्हाट्स गिवन. ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ
The last 3 quarters proved a brutal testament to the ravages that heightened competition could wreak on middle of the pack firms' operational finances. बिल्कुल. तो भाई once again a very important word, ravages. Okay, so what's the meaning over here? What's the meaning of ravages? Your time starts now. 10 seconds. Just 10 seconds. Answer quickly. Come on. Hurry up. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. बिल्कुल समय समाप्त हो चुका है आपका. वेल माय डियर फ्रेंड्स, सी जो रैवेजेस है यहां पर वो एक्चुअली में डैमेज को डिनोट कर रहा है. बिल्कुल, तो नुकसान को डिनोट कर रहा है. इट्स डिनोटिंग डैमेजेस ओवर हियर. ऑलराइट, नाउ द लास्ट 3 क्वार्टर्स इज प्रूव्ड. नाउ द लास्ट 3 क्वार्टर्स प्रूव्ड अ ब्रूटल टेस्टामेंट. बिल्कुल, तो बहुत ही दर्दनाक किस्म से बहुत ही दर्दनाक कहानी बताते हैं आखिरी के 3 क्वार्टर पिछले साल के लिए इन दोनों कंपनी के लिए, क्योंकि तब इनको मालूम पड़ा इनफैक्ट कि अगर कोई नया कंपटीशन भी आ जाए तो वो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को, किसी भी पर्टिकुलर एस्टैब्लिश्ड कंपनी को कितना बुरा नुकसान करवा सकती है. बिल्कुल, जो कि जियो की वजह से इनको एहसास हो गया. एनीवेज, यू नो, द लास्ट 3 क्वार्टर्स प्रूव्ड अ ब्रूटल टेस्टामेंट, प्रूव्ड अ व्हाट यू से, you can say, you know, very wild testament to the damages in fact that heightened operational. बिल्कुल, तो destruction कह सकते हैं आप. yes, damage और destruction both the same thing. anyways, so that heightened competition could wreak, or in fact once again could actually have on a middle of the pack, or in fact an established firm's operational finances as well. okay, तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं my dear friends. now see, in Vodafone's case, the planned merger offers the global telecom major an opportunity to downsize its engagement within a market in which promise has outweighed performance without actually exiting it. To that extent, it is a win-win for both parties. My dear friends, इससे पहले कि मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊं कि इसका मीनिंग क्या है, you have to tell me the meaning of downsize over here in this particular term. You got approximately 15 seconds to give me your answer. Your time starts now. 15 seconds. Hurry up. Come on. 10 seconds more. What's the answer? Hurry up. Downsize. 5, 4, 3, 2, 1. The time is up. समय समाप्त हो चुका है वैसे यहां पर भाई. तो देखा जाए तो अब बारी आ गई है टू डाउनसाइज इट्स एंगेजमेंट. वेल, यू नो, इट प्राइमरीली इट्स अराउंड कट डाउन इट्स एंगेजमेंट, यू नो, टू टोन डाउन इट्स एंगेजमेंट, एग्जैक्टली टू रिड्यूस इट्स एंगेजमेंट. ओके, सो दैट्स व्हाट इट्स बीइंग मीन्ड ओवर हियर. तो देख रहा हूं कि बहुत लोगों को मजा भी आ रहा है इस सरप्राइज वोकैब क्विज में. एंड एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस विल लर्न लाइक दिस ओनली. और साथ ही में वो लोग जो कहते हैं सर हम वर्ड को समझ जाते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते, मुझे इनफैक्ट भूल जाते हैं, वेल माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ऐसा बैठाऊंगा कि कभी नहीं भूलेंगे आप. ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं. एनीवेज, सो द लास्ट 3 क्वार्टर्स तो ये हम लोग समझ चुके थे. फिर इन वोडाफोन्स केस, यू नो, इन वोडाफोन्स केस द प्लान्ड मर्जर offers the global telecom major, which is of course Vodafone over here, an opportunity to reduce its engagement with a market, you know, in a particular market in which promise has outweighed performance. In fact, so you know what? The new entrant Jio just made promises and actually it outweighed performances of such big established companies as well without actually exiting it. Exactly. To that extent, it's a win-win situation for both the parties. Exactly, my dear friends. Because, you know, right, as of now Vodafone will have to disengage some of its part, and which actually it wants, and just they'll have to stick to the promises part more as of now. तो भाई देखा जाए तो ये जो वोडाफोन का जो केस है, वोडाफोन की तरफ से ये जो मर्जर हो रहा है वो एक्चुअली में सच में मतलब उसके लिए अच्छा ही मर्जर है. क्यों? क्योंकि देखा जाए भाई तो अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था पिछले साल ही कि जियो ने बस प्रॉमिस किया था, नया बिल्कुल एंट्रेंट था और प्रॉमिस किया था कि हम जो है अच्छा कॉल, हम बिल्कुल फ्री कॉल्स देंगे, फ्री नेट रहेंगे, ये और वो. और उसके बाद इस प्रॉमिस को देखते हुए एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के जो भाई उनके जो सेल्स थी वो बिल्कुल बुरी तरीके से डाउन हो गई थी और इसकी जो मार है वो बिल्कुल वोडाफोन को बहुत ज्यादा पड़ी थी. ठीक है भाई, तो आइए अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर हैविंग अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. सो आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? एंड गिव मी सम yeses, give me some hell yeah. Yes sir, we are ready. And yes, hell yeah, yes. Okay, now my dear friends, question number 1 coming up right here for you.
सो एनीवेज, तो माय डियर फ्रेंड्स, देखो आपके सामने यहां पर आ चुका है. सो ऑफ द टू मोबाइल ऑपरेटर्स, ऑफ द टू मोबाइल ऑपरेटर्स, आइडिया फंक्शन इन इट्स अर्ली years as a three-way joint venture involving. Now, my dear friends, which of these statements is a true statement? Answer quickly. You got 30 seconds. Time starts now. Hurry up. 20 seconds more, quickly. Last 10 left. What's the answer? Hurry up. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. The time is up. बिल्कुल, अब समय समाप्त हो चुका है, लेकिन लोग लगातार सही जवाब दे रहे हैं. मुझको तो ऐसे ही लग रहा है. I think most of you and the majority of you are actually giving the correct answer. So let's have a look over here now. Now, of the two mobile operators, Idea functioned in its early years as a three-way joint venture involving just US Telecom behemoth AT&T and Aditya Birla Group. No, it wasn't like that. Hence, option 1 cannot be the answer. I did see some people opting for option number 1. That's not the answer. Now, the Tata Group, the three-way venture for Idea, the Tata Group, US Telecom behemoth AT&T and the Aditya Birla Group. Well, it seems like the correct answer. Let's have a look at the next one as well. The Tata Group and the Aditya Birla Group. No, not just these two. Option number 4 says the Tata Group, US Telecom behemoth AT&T and the Aditya Birla Group. Not really. Well, my dear friends, बिल्कुल भाई, शुरुआत में तो मुझे ही लगा था कि ऑप्शन नंबर 4 ही सही जवाब है, और लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है not really. That's why we cannot go with option number 4. So all those of you who were saying option number 4, my dear friends, that's not the correct answer. Now let's have a look at the last one. The Aditya Birla Group alone. No, it was a joint venture, so it cannot be, someone cannot have a joint venture with themselves only. बिल्कुल ठीक है. तो देखा जाए, आप खुद से शादी नहीं कर सकते हो. You do need a marriage partner as well. Okay, तो इसलिए my dear friends, it cannot be option number 5. That means we are left with option number 2, and all those of you who chose option number 2, you my dear friends have done a good job, because that is the correct answer. तो खुद को आप शाबाशी दे सकते हैं, खुद को आप 1-on-1 का स्कोर भी दे सकते हैं, because my dear friends, you have done a good job and that is the correct answer. So well done. And I hope that the majority of you have opened your accounts with this particular question. ठीक है भाई, चलो अब हम लोग देखते हैं, समझते हैं, आगे चलते हैं. अगले वाला जो हिस्सा है इस आर्टिकल का, उसको देखते हैं. ओके, एंड हियर इट कम्स. Now my dear friends, see, स्वच्छ भारत मिशन a very important mission, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई शुरुआत की तौर पर मुझको भी इस मिशन में हिस्सा लेना पड़ेगा हर स्लाइड में, और कुछ और हिस्सा भी जो है वो भी यहाँ पर रह गया है. तो कल ही कोई बात नहीं, बिल्कुल स्वच्छ भारत मिशन में इस तरह लेते हुए हम सब कुछ सवाई यहाँ कर चुके हैं. अब आगे देखते हैं. नाउ set to vault the combined entity, set to vault the combined entity to the top of the heap in India's 1.13 billion subscribers strong mobile phone service market. The merger of equals, as the two companies described it, will enable Vodafone to straight away net about 3,900 crore on consummation of the deal by selling a 4.9% stake to the Aditya Birla Group, leaving its holding in the new company at 45.1%. Okay, तो भाई चलो पहले इतना हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं. But before, my dear friends, before we understand and I tell you what exactly are these lines about, what is the sense of vault over here? बिल्कुल बताओ भाई, यहाँ पर vault का मतलब क्या है? A hint, it is not the noun over here. Your time starts now. 15 seconds to tell me what's the meaning of vault over here. Hurry up. Come on. Come on, quickly. 5, 4, 3, 2, 1. The time is up. क्या आप लोगों ने pole vault नहीं सुना है? Exactly, yes, it's more around a particular gymnastic step. Okay, बिल्कुल. तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आप लोगों ने बचपन में कार्टून देखा होगा
कि भाई रोड रनर में अक्सर क्या होता था, जो कायोटी होता था वो एक बड़ा सा जो है, ही हैड अ बिग रॉड इन हिज हैंड एंड यूज्ड टू कम एंड यूज्ड टू वोल्ट, एग्जैक्टली, एंड यूज्ड टू वोल्ट टू विक्ट्री, सब लाइक दैट, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली उस पोल वॉल्ट वाला वॉल्ट की यहां बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर जो है उस पर्टिकुलर रॉड के जरिए अचानक से कूद के आगे पहुंच जाने की बात हो रही है। तो भाई इससे होगा क्या, यहां पर देखो क्या ये जा रहा है, दैट यू नो दिस पर्टिकुलर मर्जर is going to get these two companies to the top of the India's heap, to the top of the collection of India's 1.13 billion subscribers strong, 1.13 million subscribers strong mobile phone service market, and the merger of equals like Vodafone and Idea is calling it, is actually will enable Vodafone to straight away net about 3900 crore rupees. So 3900 crore rupees, wow, on consummation, means on starting up the deal, on just having up the deal, by selling a 4.9% stake to Aditya Birla Group. Okay, so that will happen then, leaving its holding to the new company at 45.1%. बिल्कुल, तो अब लोग कह रहे हैं हाँ सर जंप, अरे why will I jump? Now that's the meaning of vault over there. Anyway, so now set to jump the combined entity to the top of the heap. By the way, देखो कहने का मतलब ये है कि ये जो मर्जर होने वाला है, इस मर्जर से जो नई कंपनी बनेगी वो बिल्कुल कूद कर पहुंच जाएगी बिल्कुल इस इकट्ठा वाला जो सब्सक्राइबर है इंडिया का, 1.13 बिलियन सब्सक्राइबर है सेलफोन का, उसके बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगी, ठीक है। और साथ ही में ये जो दो बराबर कंपनियों का मर्जर है, यही नाम दिया है वोडाफोन ने भी, इसी चीज से बुला रही है वोडाफोन और आइडिया दोनों ही। इससे होगा ये जो वोडाफोन है, वोडाफोन के खाते में 3900 करोड़ रुपीस आने वाले हैं 4.9% का स्टेक बेच करके आदित्य बिरला ग्रुप को नई कंपनी में, जिसका कि यानी कि जो फिर फाइनली जो शेयर रह जाएंगे वोडाफोन के साथ वो होंगे 45.1%, एग्जैक्टली। सो माय डियर फ्रेंड्स, I hope that whatever I just taught you has got seated in your brain. Okay, अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। Now, Ideas controlling the shareholders will have an opportunity to increase the 26% stake they will have at the start of the relationship by acquiring more shares from Vodafone over the next 4 years. So, you know, so at the beginning of this partnership, Ideas controlling shareholders will have approximately 26% of the stake, but then again, they will have an opportunity to increase the stake over the next 4 years with Vodafone. ठीक है भाई? तो जब ये मर्जर की शुरुआत होगी, एकदम नवा रहेगा ये मर्जर, तो उसमें होगा ये जो आइडिया है भाई, आइडिया के जो स्टेक होल्डर होंगे उनके पास 26% का स्टेक रहेगा, कत्ता 26% का, ठीक है। और वो अगले 4 सालों में, 2 ही नहीं 3 नहीं, अगले 4 सालों में वोडाफोन के साथ जो डील हुई है उसमें बढ़ता ही चला जाएगा। काश तेजस्वी भी ऐसा बड़ा होता। एनीवेज, वेल माय डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट होप दैट व्हाटएवर आई जस्ट टॉट यू हैज गॉट सीडेड इन योर ब्रेन। अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। एनीवेज, नाउ the two firms expect to see substantial cost savings as the projected synergies from capital and operational expenditure help focus on meeting the challenges of a fast evolving market amid a tariff war with the current leader Bharti Airtel and the ambitious recent entrant Reliance Jio। सब कुछ कहानी सही है, पहले हमको आप ये बताइए कि यहां पर सिनर्जीज का मीनिंग क्या है। यस माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ सिनर्जी ओवर हियर, एंड यू गॉट अप्रोक्सीमेटली 15 seconds टू गिव मी एन आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, हरी अप। 10 seconds more, hurry up। 5 4 3 2 1। समय समाप्त हो गया, अभी तक ठीक से आंसर नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा है? चलिए बताइए क्या आंसर होने वाला है। बिल्कुल, ओके, so somebody is saying that effects, okay, Prasad says it's effect, cooperation says Deepika, synergy says move combined strongly, Akhil, okay, so Akhil wants to say that this is the sense over here, ठीक है भाई। Okay, cooperation says Lucky and Ragini and Ehsan. Okay, says co-process effects on market. Collaboration says Akshay. See, it's more like synergy is more like an effect. Okay, so synergy जो है ये एक असर की तरह को यहाँ पर शो करता है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना synergies. Over here, see what we are doing is we are using the word effect, we are using the word synergy in a form of a noun only, and that too in a plural noun.
देखा जाए कॉमनली, नाउ सी दिस इज एक्चुअली अ पोएटिक यूजेज, कॉमनली सिनर्जी विल नॉट हैव अ प्लूरल, ओके, तो आमतौर पर अगर देखें तो ग्रामेटिकली सिनर्जी का सिनर्जीज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो है, यहां पर बहुत सारे असरों को दिखाया जा रहा है. ओवर हियर इफेक्ट्स आर बीइंग शोन एंड दैट्स व्हाई दिस हैज बीन सिनर्जीज ओवर हियर. ओके, आई जस्ट होप दैट यू गाइस आर आंसरिंग क्विकली. ठीक है भाई, चलो अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं. भाई यहां पर ये समझ में आ रहा है, ये समझाया जा रहा है, ये जो दोनों फर्म्स है, द टू फर्म्स एक्सपेक्ट टू सी सब्सटैंशियल कॉस्ट सेविंग्स. ओके, सो दे आर गोइंग टू बी important cost savings, substantial cost savings to both of these companies as the projected synergy, the projected effects from the capital and operational expenditure help focus on meeting the challenges of a fast evolving market amid a tariff war with the current leader Bharti Airtel and ambitious recent entrant Reliance Jio. You know, so perhaps both of these companies, Vodafone and Idea, will be able to save a lot on their operational cost and expenditure and focus more on meeting the challenge of the fast emerging market and the competition coming from the market leader Bharti Airtel and the ambitious recent entrant Reliance Jio. तो भाई देखो यहां बात यह है, जो समझाया जा रहा है वो यह समझाया जा रहा है कि ये जो दोनों कंपनियां हैं ना, ये जो कंपनियां जो मर्ज हो जाएंगी आइडिया एंड वोडाफोन, तो उससे देखो फायदा ये चीज है, इनको ये बहुत सारा पैसा बचा पाएंगे, इनका पैसा जो है बहुत बचेगा, क्योंकि एक तो इनका कैपिटल से बहुत पैसा बचेगा, साथ ही में जो इनका ऑपरेशनल कॉस्ट होता था, जो इनका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर था, उससे भी बहुत पैसा बचने वाला है, जिससे कि और उस बचे हुए पैसे से जो नए नए अपॉर्चुनिटी, जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं इनफैक्ट, उनको डील करने में को काफी हेल्प मिलने वाली है, जिससे जो मार्केट लीडर है भारती एयरटेल, ये उससे भी दो हाथ कर सकेंगे, और साथ ही में जो रिलायंस जियो आया है, ये उससे भी दो घुसा कर सकेंगे. एनीवेज, वेल माय डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट होप यू गॉट द पॉइंट. अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं. नाउ nevertheless, the merger, however, grand the scale, could well end up being less than adequate to help staunch the flow of red ink among an industry-wide slide in average revenue per user and steadily escalating cost of bidding for fresh wireless spectrum. Okay, now first of all, before we start what exactly is, before we start explaining and understanding what exactly is given over here, can you guys tell me the meaning of red ink over here? It does not mean लाल तरह का ink या फिर लाल सिहाई मतलब नहीं है यहाँ पर. So answer quickly my dear friends, what exactly is the meaning of red ink? Time starts now. Hurry up. Come on, 15 seconds. What's the meaning of red ink over here? Hurry up. Just 10 seconds more, quickly. Meaning of red ink over here. Hurry up. 5, 4, 3, 2, 1. The time is up. Well, पता नहीं भाइयों बहनों, आपका कैसे यहां पर जवाब नहीं आ रहा है. क्या मैं यह समझ लूं कि आप ढूंढ रहे हैं जवाब, गूगल बाबा साथ नहीं दे रहे हैं क्या? Well, my dear friends, anyways, so losses, Pankaj got it right. Yes, Pankaj, it is losses. बिल्कुल, तो बिल्कुल फाइनेंशियल लॉस जो होता है उसे, या फाइनेंशियल डैमेज जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं रेड इंक से. ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं, यहाँ समझते हैं इस चीज को. वेल so might be this particular merger is going to help Vodafone and Idea win the tariff war against Airtel and Jio and in the market as well. But then again, still this particular merger, no matter how grand scale it can be, but still it might not be efficient enough, it might not be enough in fact to staunch, in fact to help, rather to stop the continuous and a very strong financial loss that both of these companies are facing in the and steadily escalating cost of bidding for fresh wireless spectrum. Okay, तो भाई देखा जाए तो बहुत ज्यादा, भले ही देखो क्या है ना, ये दोनों कंपनियां बड़ी कंपनियां मर्ज कर रही हैं, जिससे कि इनको शायद इनका जो स्केल होगा, अब इनफैक्ट जो नई कंपनी बनेगी वो और भी बहुत किस्म की बड़ी किस्म की कंपनी हो जाएगी. लेकिन तब भी चाहे जितना बड़ा कंपनी क्यों ना बन जाए, तब भी इनको जो है बहुत लॉस हो रहा है. इनको ऑलरेडी जो लॉस चल रहा है, शायद ये बड़ी से बड़ी कंपनी बना लें, लेकिन तब भी जो इनको लॉस हो रहा है शायद उसकी पूर्ति ना हो सके. और साथ ही में जो स्पेक्ट्रम, नए नए जो स्पेक्ट्रम आ रहे हैं, 5G स्पेक्ट्रम, 6G स्पेक्ट्रम, इसमें जो बिडिंग की कॉस्ट है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इन लोगों को काफी नुकसान होने वाला है. Now my dear friends, it's time for having a look at the question. तो चलिए
फिर से समय आ चुका है अगला सवाल देखने के लिए। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इफ व्हाटएवर आई एम टॉट यू हैज गॉट परमानेंटली सीटेड इन योर ब्रेन, यू कैन टाइप सीटेड सर, या आप लिख सकते हैं बैठ गया सर, और फिर हम लोग देखेंगे अगला सवाल। एंड बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया। ओके, चलो भाई हम लोग देखते हैं यहां पर नेक्स्ट वन। Okay, and first of all, before we start understanding, it's very important to have Swachh Bharat mission. Okay, now that's been completed. So answer quickly. The question is, which of the following is true according to the passage? तो सत्य और असत्य की इस लड़ाई में बताइए कि आपको क्या लगता है सत्य कौन सा है? Answer quickly, my dear friends. You got approximately 30 seconds. Time starts now. Hurry up. $20 seconds more. What's the answer? Quickly. Last 10 seconds. सबको जवाब देना है भाई. Come on. Try everyone. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. सच झूठ की इस जंग में क्या आप सही जवाब दे पाए हैं? Have you been able to give the correct answer of this particular war? Well, let's have a look, my dear friends. Now, statement A says, Vodafone to straight away net about 3,900 crore on consummation of the deal by selling a 4.9% stake to Tata Birla Group. क्या यहां पर आदित्य बिरला ग्रुप दिया हुआ है? No, it's Tata Birla Group. Hence, option A cannot be the answer, and neither can it be. They can, your statement is not true over here. बिल्कुल सत्य नहीं है. इसका मतलब 1 और 4 सही जवाब नहीं हो सकता है. It cannot be 1. It cannot be 4 as well. So sorry about this. So both of these cannot be the answer. Now, statement B. Idea's controlling shareholders will have an opportunity to increase the 26% stake they will have at the start of the relationship by acquiring more shares from Vodafone over the next 4 years. Well, this statement is true, and that's why, my dear friends, B can be the part of the correct answer. फिर देखें सी में दिया है द टू फर्म्स एक्सपेक्ट टू सी ट्रिवियल कॉस्ट सेविंग्स, यानी कि बिल्कुल भी बहुत हल्का फुल्का कॉस्ट सेविंग होगा, अच्छा कॉस्ट सेविंग नहीं होगा. एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स सी कैन नॉट बी द आंसर एज वेल. दैट मींस only B, option number 2 is the correct answer, and all those of you, in fact all those few of you who chose option number 2, you have done a good job because that is the correct answer. तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि आपका स्कोर 2 on 2 हो गया होगा, और अगर 2 on 2 नहीं हुआ होगा, even 1 on 2 is also a very beautiful score. I just hope that most of you, in fact all of you who weren't able to open their account in the previous question, would have opened their account in this particular question for sure. And अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा ताकि बाकी के लोग भी एंजॉय कर सके. ओके, Now, my dear friends, let's have a look at the next part of this particular article, and here it comes. Okay, the next part, please. So, some Swachh Bharat mission over here. Once again, let's have a clean up. Okay, बिल्कुल. तो चलो भाई, अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं. भाई यहां पर देखो लिखा हुआ है विद मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP हैविंग मेड इट इजियर फॉर कस्टमर्स टू स्विच नेटवर्क्स ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस क्वालिटी लेवल्स और प्राइसिंग. वोडाफोन एंड आइडिया हैव देयर वर्क कट आउट इन द लीड अप टू द मर्जर व्हिच दे एक्सपेक्ट टू क्लोज इन 2018. बिल्कुल, तो फाइनली भाई जो ऑब्वियस है कि आजकल बहुत ज्यादा आसान हो चुका है नंबर अपना नेटवर्क चेंज करना, बट मोर एंड मोर, इससे ज्यादा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं, पहले तो आप मुझे यह बताइए माय डियर फ्रेंड्स दैट एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क कट आउट, हैविंग योर टास्क कट आउट और हैविंग योर वर्क कट आउट. यू आर अप्रोक्सीमेटली 15 seconds. टाइम स्टार्ट्स नाउ. हरी अप, कम ऑन. ओके, 10. Come on, quickly. 5, 4, 3, 2, 1. The time is up.
वेल माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बात पहले भी बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं और ये कहते हैं सर एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, एग्जाम में ये लेवल नहीं आता है, और उसके बाद अगले ही दिन वो आ जाते हैं यू डाउनलोड चैम्प कैश, टेक माय रेफरेंस आईडी, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो प्लीज ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए, ये खुद बेचारे पुरुष ना बन पाए इसलिए ये महापुरुष बने हुए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। वेल यहां पर देखा जाए तो लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं, यहां पर कई सारे रिड्यूस्ड एफर्ट और वर्क कट आउट, एग्जैक्टली। सो अखिल गंद्रकोटा, भाई बहुत अच्छा नाम है आपका। एनीवेज, सो ही गेव अस ब्यूटीफुल नेम, सो he gave a beautiful answer as well. Work cut out to reduce your work, to reduce a task right away. ठीक है भाई, तो चलो अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं यहाँ पर। Now my dear friends, so with the MNP over here, see when MNP is there, it's really easy for people, for anybody for any consumer to switch their networks easily. But then again, these two companies, Vodafone and Idea, भाई if somebody wanted to port to Idea from Vodafone and vice versa, now they can't go anywhere. Why? Because अगर Vodafone से Idea के पास जाओगे तब भी यहीं आओगे, और अगर Idea से Vodafone के पास जाओगे तब भी यहीं आओगे। तो देखा जाए इस पर्टिकुलर मर्जर को करके इन दोनों बड़ी कंपनियों ने अपनी MNP वाली चिंता को जो है बिल्कुल ताक पे रख दिया है, ठीक है। और ये जो उनका मर्जर है वो 2018 तक जरूर पूरा हो जाएगा। Anyways, now my dear friends, so with MNP, with particular MNP, is there, with MNP being there, the task is really easy for anybody to switch on to any particular network. But then again, Vodafone and Idea have formed a perfect net over here, safety net over here, because of which MNP cannot affect them at all. Now, let's move on, let's understand more. Anyways, for Vodafone, the prospect of having to meet a huge bill of about 21,000 crore were it to lose its arbitral challenge to a tax claim dating back to the transaction that paved its entity to the Indian market must surely have been a significant consideration in tipping its hand. Exactly. तो भाई अगर देखा जाए, अगर आप सभी लोगों को याद हो तो वोडाफोन ने जब एंट्री ली थी इंडियन मार्केट में, बड़ी ही धमाकेदार एंट्री हुई थी वोडाफोन की, और अक्सर जो है कई बार इनको कोर्ट में ले जा करके अच्छे से कूटा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कुटाई करी थी वोडाफोन की, ठीक है भाई। तो एनीवे, सो फॉर वोडाफोन द प्रोस्पेक्ट फॉर having to meet a huge bill of about 21,000 crore. Now this is the amount that Vodafone had to pay, by the way. तो ये जो है वो अमाउंट था जो कि वोडाफोन को देना पड़ा, were it to lose its arbitral challenge to a tax claim dating back to the transaction. बिल्कुल, तो वो जो टैक्स क्लेम था जिसके जरिए ये एंट्रेंस आए थे, ये लगभग कह सकते हैं आप उसी के बराबर का बिल था इनके पास, ओके। एंड सो इट वाज एक्चुअली इस पर्टिकुलर डील को करते वक्त जो है ये चीज बहुत ज्यादा रोल प्ले करी होगी, ओके। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर। सो as the company's chairman Gerard Clijsters, क्या नाम है यार इस बंदे का, Gerard Clijsters wrote in the 2016 annual report, while India represents an excellent long-term investment opportunity, the present regulatory challenges are hampering economic development, and this is exacerbated by other ongoing regulatory and fiscal burdens. Time alone can tell whether this will end up as a truly successful marriage. Well, भाई ऑब्वियस है ना कि जब अल्टीमेटली जब भाई आपको अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं, उस टाइप का एटीट्यूड हो रखा था यहाँ पर वोडाफोन के कंपनी का। जेराड जो वहाँ पे चेयरमैन है जेराड का, भाई जेराड ने ये कहा 2016 के एनुअल रिपोर्ट में कि भाई इंडिया में बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म किस्म का जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन जो इंडिया का जो भाई रेगुलेटरी चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जिसकी वजह से ग्रोथ बहुत हैम्पर हो रही है इंडिया की, और जो है काफ़ी बढ़ जाएगा आगे जाके रेगुलेटरी और फिस्कल बर्डन में। वोडाफोन ऐसी कंपनी जिसका, now this is my personal experience by the way of a very close friend of you by the way, वोडाफोन ऐसी कंपनी है जिसका बिना कॉल ड्रॉप हुए कोई भी अगर कॉल हो जाए तो उसके लिए लोग जाके ईश्वर को लड्डू चढ़ा के आते हैं, और उस कंपनी का चेयरमैन ये कह रहा है कि इंडिया में हमें अपॉर्चुनिटी तो अच्छी खासी है इन्वेस्टमेंट की, लेकिन बहुत ज्यादा बाधाएं हैं। भाई तुम ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो तुम पे टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है, टेलीकॉम रेगुलेटर फाइन लगाएगा ना, तो काहे इलीगल काम करते हो। एनीवेज माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस एक्चुअली इज द बैकग्राउंड ऑफ वोडाफोन। एनीवेज, सो
So as the company's chairman, Vodafone's chairman, Gerard wrote in the 2016 annual report that, you know what, while India represents an excellent long-term investment opportunity, the present regulatory challenges of India can actually damage economic development, and this is actually exacerbated or increased by other ongoing regulatory and fiscal burdens anyway. Now, ये सब को देखते हुए अब बस समय ही बताएगा कि यार ये जो मर्जर है आइडिया वोडाफोन का, ये चल पाएगा कि नहीं. कैन दिस पर्टिकुलर मर्जर ऑफ आइडिया एंड वोडाफोन कैन इट मूव फॉरवर्ड और नॉट. अब यहां पर मैरिज लिखा है तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर शादी कैसे हो रही वोडाफोन और इसकी आइडिया की. अरे भाई, अरे बड़बा की शादी नहीं है. इस पर्टिकुलर जो मेल हो रहा है दो बड़ी कंपनियों का, दो एंटिटीज का जो मेल हो रहा है ना, ये उसको दिखा रहा है. यहां पर जो मैरिज है वो मर्जर को डिनोट हो रहा है. ठीक है भाई, चलो. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर हैविंग अ लुक एट द क्वेश्चन एंड आर यू रेडी for the Para-Jumble Royal Rumble, and here it comes. Well, my dear friends, here is your Para-Jumble, but the very important point is of Swachh Bharat mission, so here's we have cleaned up. So my dear friends, a small Para-Jumble for you guys. I hope that you guys can make it quickly, and you got 1 minute to arrange it. So hurry up. Okay, 45 seconds more, quickly. Hurry up, what's the answer? Just 30 seconds more, quickly. Okay, DBEAC says Pankaj Bhadia, ABDCE says Pratyusha, DBEAC says Jyotsna, DBEA says Prateek. Well, just 10 seconds more, quickly. Now, DBEAC says Deepika. Well, you're welcome, Vijay Krishna. Now, DBEAC says Shravan as well. तो भाई देखा जाए तो समय समाप्त हो चुका है और अब हमारी बारी है कि हम सही जवाब बताएं आपको. तो चलिए भाई. Now, all those of you who have been able to arrange them, that's really very beautiful. Now, let's arrange together as well. तो चलिए अब हम लोग साथ मिलके यहाँ पर इस पैराजम्बल को अरेंज करते हैं. ठीक है. Now, idea have their work cut out in the lead up role to the, क्या lead up role to the what? नाउ आइडिया हैव देयर वर्क कट आउट. तो देखता जाए तो ये भी एक तरीके से आपके सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस तो कर रहा है. ट्रिकी है कि नहीं? अब आगे देखते हैं. ईजियर फॉर कस्टमर्स टू स्विच नेटवर्क्स ऑन अकाउंट. ओके, ईजियर फॉर कस्टमर्स टू स्विच नेटवर्क्स ऑन अकाउंट. क्या exactly? Now what, on what account, and what is actually easier for switch network? Why exactly is it easier for customers to switch networks? Through what exactly? To why exactly? Let's have a look at the next one. Now C says merger which they expect to close in 2018. Idea have their work cut out in the lead up to the, can it be to the merger which they expect to close in 2018? Well, it might be the connection anyways. अब आगे देखते हैं. D में बहुत confusing है कि नहीं? Now, D says with mobile number portability having made it easier for customers. देखो भाई, D और B तो कम से अच्छे से बढ़िया से जो है बन रहा है, and that's why D and B are actually a combination. अब आगे देखते हैं. Of service quality levels of pricing, Vodafone and भाई देखा जाए तो आपको याद होगा ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस क्वालिटी लेवल्स. बिल्कुल. तो दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, अब बी के बाद तो फिर जो है ये ई होने वाला है. नाउ वोडाफोन एंड आइडिया. बिल्कुल. तो DBEA तो हो चुका है, अब बचता है सी. क्या हम सी को आगे लगाएंगे? merger which they expect to close 2018? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, because exactly it has an incomplete sense, and that is why my dear friends we'll have to put C after A. That means the correct order is DBEAC. बिल्कुल, जो सही ऑर्डर है वो है DBEAC. ठीक है भाई. तो उम्मीद करता हूं my dear friends that your combination, your order is also DBEAC,
and because this is the correct order, and all those of you who have been able to make the same order before I started solving it, you my dear friends have done a good job because that is the correct answer. और अगर आप आधा भी बना पाए हैं इस बार जंबल को तो आप अपने आप को 0.5 दे सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए. If you have been able to solve even half of this para jumble, you can give yourselves a 0.5 for this question. And with that, my dear friends, my dear ladies and gentlemen, I hope that your score has reached 3 on 3 for sure. And if it's not 3 on 3, even 2 on 3 is also a very beautiful score. देखो भाई, मैं ये समझ रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि अगर आप लगातार ट्राई करते जाएंगे तो आप जरूर खुद को इंप्रूव कर पाएंगे. सो हैव बिलीव इन योरसेल्फ, कीप काम, watch editorial analysis and believe in yourself. Okay, so my dear friends, now it's time for the next article. I hope that you guys enjoyed understanding this article. And by the way, अब आपको करना ये है कि भाई मैंने तो समझा दिया है, अब जो है जब हम फाइनली इस शो को खत्म करेंगे उसके बाद 7 बजे तो यही बिल्कुल अच्छे से just watch exactly what's going to happen on the YouTube channel of Adda247, and after that surprise, do go back and revise this particular article and rewrite it to me at saurabh.day@adda247.com. Now, my dear friends, it's time for the next article. I hope that you guys are on 3 on 3 for sure. चलो अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं. Next one, my dear friends. Now, what comes around should be, I suppose, what goes around must come around, right? Or what comes around must come around? Well, I suppose it should be like what goes around comes around. Anyways, चलो भाई अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं. देखो भाई, ये जो आर्टिकल है ये वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग है. एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. आज आप जानते ही हैं वर्ल्ड वाटर डे है, विश्व जल दिवस है, और बहुत जरूरी है कि हम पानी को बचाएं, एक्स्ट्रा खपत ना करें. बस ये बोलकर कि देखो भाई हम बिल तो पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज आप बिल पे कर रहे हैं पानी के लिए और आप बहुत गुरूर में है कि भाई पानी क्या, हम पे तो कर रहे हैं पानी के लिए, कहीं ऐसा ना हो जाए my dear friends that there comes a scenario when all the water gets dried up and you don't have anything to drink except your money only. Well, my dear friends, let's just hope that that scenario doesn't come ever, and let's start the article. चलो भाई आगे देखते हैं, आगे समझते हैं. Now, it's very important first of all to have some Swachh Bharat mission. बिल्कुल, चलो भाई. Okay. Now, the 2017 United Nations Water Development Program's World Water Development Report, WWDR, Wastewater, the untapped resource makes clear that we can no longer afford this disconnect. बिल्कुल, तो देखा जाए भाई 2017 की जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो है उनका, इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये जो बॉडी है इसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट. ठीक है भाई, और इसका यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कि WWDR का फुल फॉर्म क्या है ना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर यू बाय द वे. एनीवेज, तो वेस्ट वाटर के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है जहां पर यह कहा गया है दी अनटैप्ड रिसोर्स. वैसे अनटैप्ड का मीनिंग क्या है पहले ये बताओ फिर समझाऊंगा. कम ऑन, 15 सेकेंड्स, टेल मी क्विकली व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अनटैप्ड. आंसर क्विकली, हरी अप, 15 सेकेंड्स. Okay, come on, quickly. 5, 4, 3, 2, 1. The time is up. समय समाप्त हो चुका है. Well, untapped means untouched. Exactly. तो बेसिकली ऐसा पोटेंशियल जो कि अभी तक जिसको यानी छुपा रुस्तम भी कह सकते हैं आप एक तरीके से, या छुपा हुआ भी कह सकते हैं. तो मतलब ऐसा पर्टिकुलर चीज जो बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया गया है, अनयूज्ड है. ओके, तो दैट्स द थिंग, यू नो, दैट्स अराउंड अनटैप्ड. ओके, तो नित्या कह रही थी सर आज बिहार दिवस है. वेल, हमारे सभी बिहारी फॉलोअर्स को अ वेरी हैप्पी बिहार दिवस. ठीक है भाई, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बिहार का स्टेट है और जो वहां के जो भी निवासी हैं उन सभी का प्रोग्रेस अच्छे से हो और अच्छे से जो है सुख शांति सब बना रहे, पीस एंड प्रोस्पेरिटी प्रिवेल करे, और साथ ही में आप सभी लोग लगातार डेवलप भी होते जाओ और साथ ही में सिलेक्शन भी करते जाओ. वैसे भी बिहार में जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स निकलते हैं शायद किसी और स्टेट से अगले 10 साल में तो नहीं निकलेंगे. चलो कह रहे, एनीवेज, वेल, the 2017 United Nations Water Development Program, World Water Development Report, जो कि वेस्ट वाटर के अराउंड है. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट of the United Nations Water Development Program's World Water Development Report, it has said, now this particular report is around wastewater right now, and the untapped resource makes clear
The untapped resource of wastewater makes clear that we can no longer afford this particular disconnect with wastewater. ठीक है भाई, तो देखा जाए तो वेस्ट वाटर एक ऐसा इलाका है, ठीक है भाई, तो वेस्ट वाटर जो है ये ऐसा इलाका है, ये ऐसा एरिया है जहां का जो पोटेंशियल है, जहां का जो टैलेंट है वो अभी तक नहीं समझा गया है और ये शायद पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट अब हम लोग और यहां पर जो है, यहां पर इस पर्टिकुलर डिस्कनेक्ट को जो है बर्दाश्त कर पाए या इस चीज को इग्नोर कर पाए, शायद अब ये और पॉसिबल ना हो। अब ऐसा क्यों कह दिया भाई, अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। द रिपोर्ट टू बी ऑफिशियली रिलीज टुडे ऑन वर्ल्ड वाटर डे नोट्स दैट मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स वेस्ट वाटर, over 95% in some least developed countries, is released into the environment untreated. ठीक है भाई, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि पूरे दुनिया में 80% से ज्यादा पानी जो कि बिल्कुल खराब हो चुका है, एकदम गंदा चुका है, एकदम उसमें कीड़े मकोड़े आ चुके हैं, बैक्टीरिया आ चुका है, उस पानी को जो है एनवायरनमेंट में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है बिना उसको ढंग से ट्रीट करे। और भाई लोग, जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, इनफैक्ट चलो हमारा तो फिर भी थोड़ा सा डेवलप्ड इलाका है, लेकिन जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर तो 95% से ज्यादा जो गंदा पानी होता है, बैडली फुल ऑफ बैक्टीरिया, फुल ऑफ इंसेक्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो, वो जो पानी होता है वो बिल्कुल एनवायरनमेंट में ऐसे ही छोड़ देते हैं। 95% of the sum of the least in 95% of some of the least developed countries. Okay, now you know what, this particular reports of wastewater highlights the fact, and this is going to be released today on World Water Day. It highlights the fact that, you know what, more than 80% of the world's wastewater, world's polluted water containing bacteria, insects and all the negative things, you know, is released like that only in the environment without getting treated. And in the least developed countries, over 95% of the wastewater is released like that in the environment. I just hope, my dear friends, that you guys were able to get the point over here. अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं. Now, in Thailand, 77% of wastewater was untreated in 2012. It was 81% in Vietnam the same year and 82% in Pakistan in 2011. Well, my dear friends, अगर हम बात करें तो थाईलैंड में जो 77% पोल्यूटेड पानी था, जो वेस्ट वाटर था, मतलब जिसका कि आप कुछ भी नहीं हो सकता, उसमें इनफैक्ट गोबर ओबर और कीचड़ वीचड़ और जो है बैक्टीरिया जो था जो है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया था एनवायरनमेंट में 2012 में। वियतनाम में 81% इसी तरह का पानी, गोबर भरा हुआ, बैक्टीरिया भरा हुआ, इसको छोड़ दिया गया था इसी साल में एनवायरनमेंट में 2012 में ही। साथ ही में और पाकिस्तान में भैया इनके तो सवाल ही ना पूछो, मतलब दूसरी कंट्री को तो दुश्मन मानते ही हैं, अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में 2011 में 82% ऑफ द पोल्यूटेड रिवर फुल ऑफ गोबर वाज लेफ्ट लाइक दैट ओनली इनटू द एनवायरनमेंट। Anyway, so in Thailand, 77% of wastewater, of polluted water was left untreated in 2012. It was 81% in Vietnam the same year and 82% in Pakistan in 2011. Now, my dear friends, let's come down. कुछ लोग अभी इंडिया कर रहे हैं, अभी हम लोग इंडिया पे भी आते हैं रेखा, ठीक है। चलो, anyways. Now, relevant to Asia Pacific, untreated wastewater possesses a threat to both human health and our aquatic ecosystems as well. तो ऑब्वियस है, जब इतना ज्यादा वाटर पोल्यूशन होगा, तो वाटर पोल्यूशन होगा, इतना गंदा पानी होगा, बिल्कुल सीवर वाला पानी हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि इससे जो हम लोगों की जो भाई कह सकते हैं आप हेल्थ है वो तो गिरेगी ही। साथ ही में जो अगर ऑब्वियस है कि आप पोल्यूटेड पानी को छोड़ दोगे ऐसे ही नदियों में, तालाब में, तो बेचारे उन मछलियों को क्या होगा जब आप गोबर भरे पानी को उस तालाब में और उस नदी में छोड़ दोगे तो, ठीक है भाई। ऑब्वियसली यू नो देयर विल बी नो एक्वेटिक सिस्टम एज वेल, एंड पूरा जो नदी होगा वो नाले में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ऑल दोस पीपल हु पास डेली through the Yamuna bridge in Delhi, you know, they would know what exactly am I talking about. You know, it literally smells. All of Yamuna smells exactly. आप उस ब्रिज के ऊपर से कभी निकल के देखो कितनी बदबू आती है उस पर्टिकुलर ब्रिज से। लगेगा नहीं कि वो कोई नदी है, यही लगेगा कि ये तो नाला है। Anyways, my dear friends, now, so this region, you know, so perhaps when we talk about the Asia Pacific region, you know, specifically Asia Pacific region, the untreated water, the, you know, untreated water, polluted water possesses a threat, possesses a danger to both human health and also our aquatic ecosystems as well. Now, this region is in midst of it's middle of a profound urban shift as of 2009. An estimated 30%
of urban dwellers in the region lived in slums, low income areas where wastewater is often discharged into the nearest surface drain or informal drainage channel. ठीक है भाई, अगर देखा जाए तो भाई, तो ये जो इलाका है एशिया पैसिफिक वाला, ये वो इलाका है जहां पर भाई बहुत ही गहरा किस्म का अर्बन शिफ्ट यानी कि शहरी शिफ्ट आ रहा है, शहरीकरण चल रहा है। और साथ ही में 2009 में अगर हम बात करें तो तकरीबन 30% जो लोग थे एशिया पैसिफिक में, ये जो है शहरी लोग थे एशिया पैसिफिक में, ये उन इलाकों में थे जो कि स्लम में यानी झुग्गी झोपड़ियों में थे, या फिर ऐसे एरिया में थे जहां पर जो है कम इनकम के घर हों, ठीक है भाई, या फिर बेसिकली कह सकते हैं आप और ऐसा था झुग्गी झोपड़ी का जो इलाका होता है या फिर कम इनकम का जो इलाका होता है, ऐसा इलाका होता है जहां पर गंदा पानी जो है कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर नाले में फंस जाता है। इनफैक्ट किसी भी पर्टिकुलर नाले में उसको चाहे वो ढंग से बना हो चाहे ना बना हो, वहीं पर उसको जो है डायरेक्ट कर देते हैं, वहीं पर उसको डाल देते हैं। एनीवे, सो this region of Asia Pacific is in the middle of a profound or of an extremely deep urban or a modern shift, and as of 2009 an estimated 30% of urban dwellers of people living in cities in the region, you know, lived in slums, okay, low income areas where wastewater, where polluted water is often discharged into the nearest surface drain or informal drainage channel. Okay, now my dear friends, let's have a look at the question. चलो भाई, बहुत ज्यादा यहाँ पर वाटर पोल्यूशन की बात अभी बस शुरू ही हुई है, अभी तो भाई बहुत कुछ और बात भी करेंगे हम लोग यहाँ पर. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन एंड हियर कम्स योर क्वेश्चन. एंड बिफोर दैट लेट्स हैव सम स्वच्छ भारत मिशन एज वेल. ओके, चलो भाई, ये सवाल है आपके सामने. चलो तकरीबन, so the report to be officially released today on World Water Day notes that more than 80% of the world's wastewater. Now answer quickly, my dear friends, what exactly is the correct statement? Hurry up, time starts now, 30 seconds. $20 seconds. Quickly, what's the answer? अरे अब बफरिंग नहीं है, या अर्थक्वेक है. हम इतना कुछ यहां पर ज्ञान दे दिए कि धरती मां बिल्कुल कांप उठी है कि इतना गंदा हो गया है यमुना, इतना गंदा हो गया है पानी धरती का. चलो भाई, लग रहा है कई लोगों को बफरिंग हो रही है. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आई विल गिव यू 20 सेकेंड्स मोर टू गिव द आंसर. आंसर क्विकली. अगर एड का टिकर चल रहा हो तो प्लीज उसको रोक दीजिएगा. ओके, क्विकली, 10 seconds more. Last line is over 95% in all least developed countries is released into the environment untreated. 95% से ज्यादा जो वेस्ट वाटर है और सभी कम डेवलप्ड देशों में जो है बिल्कुल एनवायरनमेंट में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, टाइम इज अप. समय समाप्त हो चुका है. कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो बिल्कुल एक ही जैसा लग रहा है. वेल माय डियर फ्रेंड्स, some people were talking about that, sir बहुत ज्यादा जो है ऐसे questions तो आते नहीं है. चलो भाई, ऐसे तो आते हैं ना. Now solve this question. Anyways, so the report to be officially released today on World Water Day notes that more than 80% of the world's wastewater, over 95% in developed countries. What we talk about, what did we say? Over 95% in developed countries? No, that's why option 1 cannot be the answer. इसीलिए विकल्प नंबर 1 सही जवाब नहीं हो सकता है. अब विकल्प आंसर नंबर 2 देखते हैं. Over 95% in least developed countries is released into the environment untreated. Over 95% in least developed countries. Well, this can be the answer. Anyways, अब आगे देखते हैं. Now ऑप्शन नंबर 3 में दिया है over 95% in the least developed countries. In the least developed countries is released in the environment untreated. ये भी सही लग रहा है. This can also be the answer. Now, my dear friends, option number 4 says over 95% in some least developed countries is released into the environment untreated. Now, my dear friends, this can also be the answer. Now, option number 4 में देखते हैं over 95% in all least developed countries is released into the environment untreated. यानी कि सभी कम डेवलप्ड नेशन में जो है पानी ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. 95% में ज्यादा लोग पानी में जो है ऐसे छोड़ देते हैं इन्वायरमेंट में बिना उसको ट्रीट किए. वेल, ऑप्शन नंबर 5 is not the answer. Now it is only going to be between 2, 3 and 4.
वेल माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम देखें यहां पर तो आपका ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 लगभग सेम ही जैसा है। और ऑब्वियस है यहां पर अगर हम देखें यहां पर ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो ओवर 95% इन सम लीस्ट डेवलप कंट्रीज दिया है। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 में भाई बात जो है वो लीस्ट कंट्रीज की है, जनरल बात कर दी गई है लीस्ट कंट्रीज के बारे में। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट जनरली टॉकिंग अबाउट लीस्ट कंट्रीज, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज टॉकिंग अबाउट इन सम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। यू नो व्हाट डू यू थिंक माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट कैन बी द आंसर? यू आर अप्रोक्सीमेटली 15 seconds more to tell me ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4। बताओ भाई क्या सही जवाब है, 2 या 3 या 4? 10 सेकेंड और बताओ, 2 या 3 या 4 क्या सही जवाब है? बस 5 सेकेंड और। इज इट 2, इज इट 3, इज इट 4? 2, 3 और 4, 2, 3 और 4? बताओ भाई क्या जवाब है? Okay, well, my dear friends, it's about some least developed countries. Like Lucky said, like many of you are saying, it's going to be option number 4 because that's what was mentioned in the previous slide as well. And that's why, my dear friends, option number 4 is the correct answer. And all those of you who hit a boundary on question number 4, you have done a good job because that is the correct answer. And I hope the majority of my dear aspirants, of my dear viewers, have scored 4 on 4 for sure. And if it's not 4 on 4, even 3 on 4 is also a very beautiful score. ठीक है भाई, तो चलो अब देखते हैं, अब समझते हैं, अब जो बाकी का खेल है उसको भी देख लेते हैं. Right, my dear friends? Now let's have a look at the question number 5 coming up right here for you. और सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान चला देते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे. चलिए अब देखते हैं यहां पे. नाउ see, meanwhile city based hospitals and small and medium sized enterprises dump a slew of medical waste and chemicals into wastewater system, likely to face the risk of contracting cholera, dysentery and typhoid and polio due to consuming fecal contaminated water. Well, my dear friends, tell me क्विकली व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्लू. बिल्कुल, चलो भाई बताओ स्लू का सही क्या होगा यहां पर. सही मीनिंग आपके पास है 15 सेकेंड. टाइम स्टार्ट्स नाउ. हरी अप. मीनिंग ऑफ स्लू, कम ऑन गाइस, क्विकली. ओके 5, ओके 10 मार्क, कम ऑन, जस्ट 10 seconds more, quickly. What's the answer? 5, 4, 3, 2, 1. The time is up. समय समाप्त हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स आपका. देखा जाए तो क्या सही जवाब होगा यहां पर. Sumit Chaurasia is still stuck at option number 2. Why is that? I just don't get. Anyways, I've already given the answer to the previous question. Okay, तो गार्बेज, बिल्कुल अश्विनी कह रहे हैं सर गार्बेज. दलदल कह रहे हैं सोनल. रागिनी कह रही हैं सर कर्व. दीपिका कह रहे हैं अनकंट्रोलेबल. लार्ज अमाउंट कह रहे हैं अमित. ओके, वेल माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज. ओके, समथिंग लाइक दैट बाय द वे. एनीवेज, सो भाई गार्बेज का कूड़ा का बहुत बड़ा अमाउंट, उस केस का यहां पर सेंस है. Well, meanwhile, so we were just talking about the various water pollution, what that's happening in cities and that's happening in the areas of Asia Pacific. In the meanwhile, you know, इसी दौरान what's happening is that city-based hospitals, modern hospitals, multi-specialty hospitals, super specialty hospitals, by the way, and small and medium-sized enterprises like clinic and stuff like that, or nursing homes, you know, they just drop a big garbage of medical waste and chemicals into water system. Okay, and you know, likely to face, which actually is going to happen is that, you know, likely to face the risk of contracting cholera, dysentery, typhoid and polio due to consuming fecal contaminated water. ठीक है भाई. अब देखो यहां पर हम कहना यह चाह रहे हैं कि अच्छे खासे जो हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे खासे जो बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल होते हैं, साथ ही में जो नर्सिंग होम होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, ये जो है मेडिकल वेस्ट का और केमिकल्स का एक बड़ा सा जो गार्बेज होता है, जो बेसिकली बड़ा सा जो कूड़ा होता है, उसको ऐसे ही डाल देते हैं किसी भी पर्टिकुलर कह सकते हैं आप वाटर वेस्ट सिस्टम में, भले वो ढंग का बनाए हो चाहे नहीं बनाए हो. और जिससे क्या हो सकता है, जिससे जहां पर वो वाटर वेस्ट सिस्टम होता है उसके आसपास के जो लोग हैं उनको कोलेरा हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, पोलियो भी हो सकता है. और गोबर, एग्जैक्टली गोबर खाने की वजह से, इनफैक्ट गोबर खाने क्या, गोबर वाले पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. यही सब इन्हीं सब के बराबर. ठीक है भाई. सो एनीवेज माय डियर फ्रेंड्स, सो वेल इन मीनवाइल द सिटी बेस्ड हॉस्पिटल्स
and small and medium sized enterprises dump a big garbage, in fact a big collection of medical waste and chemicals into the water systems. So into the water waste systems, likely to face the risk of, in fact, and not only that, ये जो लोग जो in fact डालते हैं, ये basically ये जो पूरा जो कूड़ा डालते हैं, उनको भी हो सकता है इसी चीज की वजह से, anyways, you know. So system likely to face the risk of contracting cholera, dysentery, typhoid and polio due to consuming fecal contaminated water. ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं, my dear friends. Now some people are saying, sir, what is exactly fecus? In simple terms, tatti. That's the meaning of fecus. Now, अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं. Okay. So, efficient wastewater management services can more effectively deal with such pollution. अब obvious है, you know, when there is such a grand level of pollution, efficient and properly, you know, proper wastewater management services can be more effectively deal with such pollution. अब obvious है भाई, जो भी कूड़ा होता है, मेडिकल वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट होता है, वो इन हॉस्पिटल के लोगों को या इन नर्सिंग होम के लोगों को या इन क्लिनिक के लोगों को खुद ही डिस्पोज करना होता है वेस्ट वाटर के वहां पर जाके. इससे ज्यादा अच्छा होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस, कोई पर्टिकुलर कह सकते हैं आप, बन जाए ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेस्ट वाटर डीलिंग में काफी एफिशिएंट हो, काफी अच्छा हो, वो डिस्पोज करे इस पर्टिकुलर चीज को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ओके, सो इट विल बी बेटर. So it will be better, you know, if some efficient wastewater management services are taken into control, in fact, are taken into effect to more, because they'll be able to deal with more effectively with such kind of a pollution. Okay. Now, let's have a look at the next one. Okay. So I just hope that जो भी यहाँ बिठाया है वो दिमाग में आपके बैठ गया है. आगे देखते हैं, आगे समझते हैं. However, even in countries with improved sanitation coverage, only 26% of urban and 34% of rural sanitation and wastewater services prevent human contact with excreta along the entire sanitation chain. ठीक है भाई, तो चलो भाई, अब तक तो हम लोग बात कर रहे थे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की. अब थोड़े अच्छे से डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर लेते हैं. और ऐसे ऐसे कंट्रीज जो कि बहुत डेवलप कंट्रीज हैं, जिनका सैनिटेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उन देशों में भी, उन कंट्रीज में भी केवल 26% ऐसे शहरी सैनिटेशन तरीके हैं और केवल 34% ऐसे गांव के ग्रामीण सैनिटेशन तरीके हैं, जहां पर जो है बिल्कुल कह सकते हैं आप इस तरह के वाटर वेस्ट सर्विसेज हैं जिससे कि जो है इंसानों का कांटेक्ट इनफैक्ट नहीं होता है विद वेस्ट, इनफैक्ट विद एक्सक्रीशिया, विद गोबर के साथ कांटेक्ट नहीं होता है इन पर्टिकुलर सिस्टम्स में ही. ठीक है, सो इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज, इवन इन कंट्रीज विद इंप्रूव्ड सैनिटेशन कवरेज, ओनली 26% ऑफ अर्बन सैनिटेशन सर्विसेज एंड 34% ऑफ रूरल सैनिटेशन सर्विसेज and wastewater management services prevent human contact with excreta along the entire sanitation chain. ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं यहाँ पर. Anyways, now along with the human cost, there are enormous economic stakes involved in the effective management of wastewater. तो भाई देखा जाए तो obvious है कि इस तरीके से अगर देखा जाए भाई, तो ऑब्वियस है कि ह्यूमन कॉस्ट के अलावा, यानी कि जो इंसानों को जो भी नुकसान आता है, यहां पर इंसानों को जो भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है, तो उस पर्टिकुलर चीज के कॉस्ट के अलावा भी बहुत सारे इकोनॉमिक स्टेक्स होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेक्स होते हैं, जो कि इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में हिस्सा रहता है. ठीक है, एग्जैक्टली, यू नो. सो इवन व्हाट यू से कह सकते हैं आप, along with the human cost of all the people who get ill because of water pollution, there's actually a huge economic stake. You know, there are huge economic stakes involved in the proper management of wastewater as well. So once again, my dear friends, lots of pollution. Let's have a look at the question, and here comes the question number 5, and most probably no Swachh Bharat mission. Anyways, so which of the following is not true according to the passage? आपको इसका जवाब देना है और जवाब दीजिए जल्दी से. Your time starts now. 30 seconds. Hurry up. Quickly. Excreta also means tatti. Unfortunately, it's all about tatti today. Well, 10 seconds. Quickly, what's the answer? 5, 4, 3, 2,
1। द टाइम इज अप, बिल्कुल समय समाप्त हो चुका है यहां पर। और सही जवाब जो है वो मेरे ख्याल से कैसे लोग कोशिश कर रहे हैं सही जवाब देने की, चाहे पता नहीं कैसे उनका जवाब फंसा हुआ है, अटका हुआ है। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे समझते हैं यहां पर। एनीवेज, सो inefficient wastewater management services can more effectively deal with such pollution। अगर यहां पर एफिशिएंट लिखा होता तो हम मान लेते, लेकिन यहां पर लिखा है इनएफिशिएंट, तो ये कैसे जवाब हो सकता है? दिस कैन नॉट बी द आंसर माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई वी विल नॉट हैव टू कवर विद दिस वन नाउ, यानी कि दिस कैन बी द आंसर बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू। Okay, so in countries with improved sanitation coverage, only 26% of urban and 24%, wait, 34% of rural sanitation and wastewater was the correct one, but यहाँ पर दिया है 24%. That is why this is also not true, my dear friends. अब देखते हैं C में हम लोग यहाँ पर. Meanwhile, city-based hospitals and small and medium-sized enterprises dump a slew of medical waste and chemicals into wastewater. ये सही है आपके स्लाइड के हिसाब से, but that means that A and B are not true, and that's why all those of you, my dear friends, who chose option number 1, only A and B, they have done a good job because this is the correct answer. तो बहुत बहुत शाबाशी है उन सभी लोगों को जिन्होंने यहाँ सही जवाब दिया है, and I hope that you guys are enjoying the video by the way, and you've also liked it and you've also shared it, because now it's time for the final and the last question, जिसके बाद हम इस सेशन को फटाक से बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम हमारा फाइनल और लास्ट क्वेश्चन, which is going to be based on the latest pattern close test। Exactly। चलो हम लोग जल्दी देखते हैं हमारा लास्ट सवाल, और ये रहा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, लास्ट सवाल तो तब आएगा ना जब लास्ट हिस्से समझ लेंगे, तो भाई चलो जल्दी से लास्ट हिस्सा भी समझ लेते हैं। ओके, सी अनटैप्ड रिसोर्स, बिल्कुल जो वेस्ट वाटर है उसके बारे में यहाँ बातचीत चल रही है। अ सर्कुलर इकोनॉमी इज वन इन विच डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर इंटरडिपेंडेंट विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन रिसाइकलिंग। बिल्कुल भाई देखो, एक सर्कुलर, एक गोल इकोनॉमी उस तरह की होती है जो कि इसमें एक साइकिल बना होता है डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच में, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है भाई, और साथ ही में रिसाइकलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस भी जाता है। अब आगे देखते हैं यहां पे। Now from this perspective or point of view, wastewater is an untapped or unutilized resource of unparalleled potential। इस नजरिए से अगर देखा जाए तो वेस्ट वाटर जो है भाई, ये वो इलाका है जो बिल्कुल भी जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसका प्रयोग नहीं हुआ है, और बिल्कुल इसकी बराबरी के इनफैक्ट पोटेंशियल वाला, टैलेंट वाला कोई और फील्ड है ही नहीं। नाउ व्हेन सेफली ट्रीटेड, वेस्ट वाटर कैन बी अ सोर्स ऑफ वाटर, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर रिकवरेबल मैटर दैट इज बोथ अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल। अगर वेस्ट वाटर को ढंग से ट्रीट किया जाए, लाइक इजराइल हैज गॉट अ टेक्निक जहां पर वो पूरे इनफैक्ट वेस्ट वाटर को, पूरे गंदे नाली वाले पानी को जिसमें गोबर भरा है, कीचड़ भरा है, बैक्टीरिया भरा है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, यू नो, उस पानी को दे कन्वर्ट इट इनटू ड्रिंकिंग वाटर सेफ। Exactly, so that that water of a drainage full of garbage and full of sewer water gets converted so pure that you can actually drink that water, so this is the technology of Israel by the way। Anyways, तो अगर ढंग से ट्रीट किया जाए सीवेज वाले पानी को, तो वेस्ट वाटर से भी पानी, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स और भी बहुत कुछ निकाले जा सकते हैं, लेकिन अगर ढंग से ट्रीट किया जाए, और साथ ही में ये वो चीजें हैं जो कि काफी अफोर्डेबल रहेंगी और काफी सस्टेनेबल भी रहने वाली है, ठीक है भाई। तो चलो अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं यहां पर माय डियर फ्रेंड्स। नाउ द एक्सट्रैक्शन of wastewater byproducts such as salt, nitrogen and phosphorus has proven attractive or lucrative in Asia Pacific। बिल्कुल, तो जो भी वेस्ट वाटर बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि नमक है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस गैस है, भाई इनको जो निकाले जाना वाला है वेस्ट वाटर से, ये जो एक्शन है ये काफी अट्रैक्टिव है एशिया पैसिफिक के इलाके के लिए, काफी इंटरेस्टिंग है एशिया पैसिफिक के इलाके के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नाउ in Southeast Asia, revenues from fertilizer have paid for the operational cost of the systems to extract them several times over। तो ऑब्वियस है भाई कि अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें अराउंड साउथ कोरिया एंड स्टफ लाइक दैट, सो रेवेन्यूज फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, यानी कि उन्होंने इतना पैसा बनाया है फर्टिलाइजर्स से कि इनफैक्ट जो इतना ज़्यादा उनके पास रेवेन्यू आया है फर्टिलाइजर बनाने के प्रोसेस में, इनफैक्ट फर्टिलाइजर्स को बेच करके, कि जितना भी कॉस्ट लगा था उन सब का प्रॉफिट बन गया। यानी कि वहां पर साउथ ईस्ट एशिया में लोगों ने वेस्ट वाटर को ट्रीट करके जो खाद बनाया है उससे इतना मुनाफा आ गया है कि सारा जो कॉस्ट था वो अपने आप कवर हो गया कई बार, ठीक है भाई, कई टाइम, कई गुना बार।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्न्ड दैट द वाटर क्राइसिस वुड बी द ग्रेटेस्ट ग्लोबल रिस्क फेस्ड बाय पीपल एंड इकोनॉमीज ओवर द नेक्स्ट 10 years। तो अगले 10 साल के बाद अगर ढंग से ट्रीट नहीं किया गया पानी को, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यह समझता है कि शायद यही जो यहां पर दिक्कत होने वाली है वाटर क्राइसिस की, वो अगले 10 साल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है दुनिया की हर बड़ी इकोनॉमी के लिए। Exactly, my dear friends. So that is why save water, save life. And now the answer quickly, बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उससे पहले कुछ स्वच्छ भारत मिशन हो जाए यहां पर भी। बिल्कुल my dear friends. So answer quickly about this particular question। देखो ये एक क्लोज टेस्ट है नए पैटर्न का, जहां पर my dear friends आपको मुझे बताना है what is the antonym of the word by products according to the previous to the sentence over here, according to the usage of by products over here। तो by products का इस्तेमाल देखिए इस इलाके में, इस जगह पे, और बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा my dear friends। आंसर क्विकली, you got 30 seconds, time starts now, hurry up, come on। Twenty seconds more. Hurry up. Ten seconds more. Quickly. Okay. 5, 4, 3, 2, 1। द टाइम इज अप। समय समाप्त हो चुका है। तो भाई हमको यहां पर देखना था एंटोनिम क्या होगा। अगर हम देखें पहले ऑप्शन पे आफ्टर इफेक्ट, तो ये तो दूर का भाई है बाय प्रोडक्ट का, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर सिनोनिम्स एंड दिस कैन नॉट बी द एंटोनिम। फिर अगर हम कंसिक्वेंस देखें तो ये भी मौसिक बेटा है बाय प्रोडक्ट का, यानी कि once again a far relative of the same word, so that is why my dear friend this also cannot be the antonym। Now then fall out, well now my dear friends fallout and byproduct are very not related at all, and they are not antonyms as well। that means fallout is more of a neutral option, this cannot be the answer anyway। फिर अगर हम देखें तो spin off एक तरीके से देखा जाए तो consequence रिजल्ट के तौर पे आ सकता है, and that's also related to byproduct as in a synonymous way। but when we talk about origin, byproduct that happens after a result, origin that is there from the start, and that's why my dear friends option number 5 is the correct answer। and all those of you who gave the correct answer, well they would have chosen option number 5 for question number 6। तो उन सभी लोगों ने जिन्होंने यहां पर 6वें क्वेश्चन में 5वां ऑप्शन लगाया है, उन्होंने सही जवाब दिया है। and I hope my dear friends that most of you have scored a perfect 6 on 6, और बिल्कुल 6 बॉलों पे आप लोगों ने छक्के लगाए होंगे। and if it was not 6 on 6, I hope my dear friends your score would have been 4 on 6 or above for sure। Okay, so that was all my dear friends in this particular session of the Hindu editorial analysis, and today is 22nd March, and now my dear friends we are approximately just less than 1 hour away from the surprise of Adda247 that is going to bring the revolution in all of India regarding education। so do just stick to Adda247 and let's see what exactly this surprise is about। and remember that at Adda247 government job is right there in your pocket, and let's do something revolutionary।